Very good evening to everyone and welcome to this session of Excel. Today we are going to look at lookup functions, which are two-way lookups and which will help you in learning how to apply lookup or how to search for values from one sheet to another sheet. So what do you see on the screen is the data set which has the employee details of a company. We have employee ID, we have name, prefix, Mr., Mrs., Doctor, like that. We have first name, middle name, and last name. Then we have gender, email ID, first name, father's name, father's maiden name, date of joining, salary, state, city, zip, and region. If you scroll down, you will see that the data is 27 rows of data. And then we have three lookup sheets. Lookup one. In the lookup one, from based on the email ID, you have to get the salary and the employee ID. On the lookup two, you have to find out the first name, middle name, and last name and gender from the employee ID. And on the lookup three, you have to find the similar, but we will do in a different format. So, shall we start, everyone? This is the data. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, we are going to work with this data. Okay, तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहले lookup function से. So, how many are joining it for the coming for the first time? You can type first time in the chat box or FT in the chat box if you are coming for the first time or you missed the previous session. You can type the FT in the chat box first time. Okay. So now, if you see the data, we have the employee ID in the first column. The first column is the employee ID, and the rest. How many columns do we have? We have from A to P. Let us see the column number for P. So I'm putting a formula of column and it is giving me 16. So we have a 16 column data. The data is spread to 16 columns. Okay, so we have some new joinees today. Okay, no problem. You will understand as we go along. If you don't understand anything, you can type in repeat in the chat box, repeat the same. Okay, so I will be using English mostly in the session, throughout the session. If someone wants me to repeat the things in Hindi, you can type Hindi or H in the chat box. I will do it. Else, I will be using English only. Now, we have email ID, we have salary, and we have employee ID. From the email ID, I want to find out the salary of the employee and also the employee ID. Now, tell me, am I audible, people? Can you confirm if you can hear me? क्या था? Okay, I think I got disconnected. So, am I audible to everyone? I hope I'm audible to all. Yes, sir. Audible. Okay, I'm sharing my screen one more time. So, I hope you can see my screen now. Yes, sir. Visible. Visible. Okay. So, I was asking you, uh, can we, now, how do I do it? Can we apply the VLOOKUP function to find out the salary from the employee ID? The employee ID is in column number 7. Okay, so I'll put the column formula so that we can see the column number for all the columns. So I'm putting this formula in all the cells. So now my first row is having the column numbers for all the columns. So yes, can anyone tell me, using the employee ID, I want to find out the salary. Is it possible and what formula should we use in this case?
Those who have been attending my sessions previously, they should be able to answer this question. Kusum, would you like to try? You were there yesterday. So can you try which formula should we use to calculate to find out the salary based on the employee ID, email address of the employee? These are the scenarios which are generally there in corporates. Whenever you work with any company, you will be faced with such kind of problems. We look up. Okay, you are saying we look up. So let us apply we look up over here. So those who are new, we look up is a function which will help us in finding one value from the table to another value. Okay, so we will use a lookup function for this. Okay, so what is the lookup value? So Kusum, you have to help me in this. What will be the lookup value? Tell me. We have started the lookup function. It is asking for lookup value. So everyone who would like to participate, you can tell me what should be the lookup value in this particular case. What are we looking to find? We are looking to find the email ID, the salary based on email ID. So what will be the lookup value? What will be the lookup value? The salary. No, salary is not the lookup value. Lookup value का मतलब आप किसे ढूंढ रहे हैं? हम क्या ढूंढ रहे हैं? सैलरी ढूंढ रहे हैं, लेकिन किसके बेसिस पे ढूंढ रहे हैं? प्रिया सर वर्मा इज एम्प्लॉय सेइंग, आईडी जो डेटा है वो उसका। हाँ जो डेटा है, तो डेटा क्या है? ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी कहाँ लिखा है? E5 में। सो आई एम सेलेक्टिंग E5। E5 विल बिकम माय लुकअप वैल्यू। ठीक है, E5 विल बी आर लुकअप वैल्यू। दिस इज हाउ विल स्टार्ट। उसके बाद पूछ रहा है टेबल एरे। नाउ व्हाट इज द टेबल एरे? व्हाट इज द टेबल एरे? टेबल एरे का मतलब है पूरा टेबल, द एंटायर टेबल विच हैज द डेटा। नाउ इन द एंटायर टेबल, should I select from employee ID or should I select from email ID? सोचिए, शुरुआत से शुरू करें या ईमेल आईडी से शुरू करें? एम्प्लॉय आईडी और ईमेल आईडी? I want all of you to answer. If you are coming to the class, you should be active, else you can leave. एम्प्लॉय So I आईडी। want everyone to put your comments in the chat. आप नए भी हैं तो भी आप लिख सकते हैं. You have to do a guesswork. So tell me, is it employee ID or email ID? What should we put? Everyone is saying employee ID. Why are you saying employee ID? Why you are saying employee ID? Because it is the first column in the table. But we are not using employee ID, right? We are using email ID. So if you use email ID, it will give you the wrong answer. It will not give you the answer. Let me try this. So I'm just following what you are saying. So I'm starting from the email ID, right? And based on the email ID, now which column I want to extract? Which column number has salary? Tell me. Which column number has salary? 12। 12. So I'll put 12, comma. Now we want an exact match or an approximate match. So always in lookup function, we use a exact match. So we'll put false. We'll put false. See, we are getting a NA. We are getting an NA. Now, why we are getting an NA? Can anyone tell me? Those who had attended previous day session, क्या बता सकते हैं? ये जिसने वी लुकअप सीखा है वो बता सकता है कि NA क्यों आ रहा है? pop.vis.h@hotmail.com. This email ID is there in our database. ये रहा ये ईमेल आईडी। तो अगर ईमेल आईडी है तो उसका सैलरी आना चाहिए था, बट सैलरी आ नहीं रहा है। Why are we not getting this answer? Why are we not getting the output? सर कैन आई गेस? Yes, please. Sir, can सर वी we लुकअप। try dollar symbol? What? What should we do? Can we try the dollar symbol when we are trying to select the cells? No, dollar symbol will not make any difference here. The point is,
I told yesterday also. Maybe those who attended they did not pay attention, I but I think VLOOKUP works on the specified data. this is specified data only. I This is think so, the like I'm guessing. no. See, I'm telling you why it is not working. Maybe selection of wrong table array. Yes. So there is the wrong selection of the table array. So what you need to remember is we need to remember that whenever we are applying VLOOKUP, it should always we should always select the first column which is the lookup value. So we should not start selection from employee ID. We should start the selection from email ID. Okay. So those who are answering employee ID was wrong. We should start the selection from email ID. So I'm doing this correction in the formula. So we are going to select the data from email ID till the end. And now okay, so we will select the entire data. Okay, we'll select the entire data. We will select the entire data, and then we are going to use the salary column. Now, can you anyone tell me from employee ID which column is the salary? We cannot put 12 now. Which column is salary from employee ID? Email ID. You have to count from email ID. Six, So 1, six. 2, 3, 4, 5, 6. We'll put 6 and we will put false for exact match. Are we getting the answer now? Are we getting the answer now? 88,733 is the salary, which is the right answer. Correct? We are getting the answer now. Yes, sir. Yes, sir. तो क्या गलती हुई थी? गलती ये हुई थी पहली बार में कि याद क्या रखना है हमें ये याद रखना है कि जब भी हम वी लुकअप का फॉर्मूला लगा रहे हैं, we have to start the table from the column which has the lookup value. अगर यहाँ पे lookup value में employee ID लिखता मैं, चलो I'm adding the employee ID column also. So I'm adding one column of employee ID. We have to find out the employee ID also. ठीक है? Now where is the employee ID? Employee ID is in the first column. ठीक है? Employee ID is in the first column. So can I apply reverse lookup in the lookup function? एक वी लुकअप जब हम लगाते हैं तो रिवर्स काम कर सकता है क्या ये? जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, क्या ये लेफ्ट से राइट से लेफ्ट जाएगा? ईमेल आईडी से क्या हम एम्प्लॉय आईडी निकाल सकते हैं? यस और नो? नो आई थिंक, है ना? No. No, it will not work reverse direction. In the reverse direction, it will not work. So that is the limitation of this function of VLOOKUP. It will always work from left to right. Those who are attending for the first time, VLOOKUP always work from left to right. So if you have the lookup value on the left hand side, then your resultant value, the value that we want to derive, should be on the right. अगर वो लेफ्ट में होगा तो ये काम नहीं करेगा. तो अब क्या करें? What formula should we use? Because this doesn't work. So those who attended the previous day session, can you help me? कि what should we do? क्या किया जाए? क्योंकि ये उल्टा तो नहीं चलेगा. मतलब 7 वाले कॉलम को देख के कॉलम 1 से वैल्यू लिया है, ये तो नहीं हो सकता. मैच वैल्यू लगाएंगे. क्या लगाएंगे? मैच मैच फंक्शन. मैच फंक्शन. मैच फंक्शन किसके साथ लगाएंगे? अकेले मैच फंक्शन से हो जाएगा या उसके साथ किसी का सहारा लेना पड़ेगा?
will match function alone do the work or we need to apply one more function along with match? कल मैंने कौन से दो फंक्शन One सिखाए more Index. थे? function. Index. Yes, Subhash Index. has index. So now everyone, I am going to again teach index and match. These are considered to be the most difficult formulas in Excel. ठीक है, अभी मैंने एक सर्वे किया था अपने दूसरे ग्रुप में and there are professionals over there. So everyone, mostly people said that it is the most difficult function of index and match. ठीक है, अब देखिए कैसे काम करेगा एंड इट इज वेरी पावरफुल फंक्शन ऑल्सो. जो डिफिकल्ट होता है वो पावरफुल भी होता है. तो लेट अस वर्क एंड लर्न दिस इंडेक्स एंड मैच. पहले मैं सेपरेटली बताता हूँ इंडेक्स क्या करता है. इंडेक्स इंडेक्स returns a value or reference of the cell at the intersection of a particular row and column. ठीक है, अभी एक काम करते हैं यहाँ पर. लेट मी क्रिएट अ टेबल. ठीक है, आई एम पुटिंग सम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. रेंडमली मैंने ये नंबर्स लिख दिए हैं यहाँ पर. आई हैव पुट सम रैंडम नंबर्स ओवर हियर. ठीक है, दिस इज अ टेबल, दिस इज द डेटा आई हैव. राइट नाउ this is called as an array or a data. ठीक है, now what will index do? Index will get me a value from these numbers based on my input of row number and column number. जो भी रो और कॉलम मैं बताऊंगा उस रो और कॉलम पे से वैल्यू उठा के ले आएगा. ठीक है, तो लेट अस डू दिस इंडेक्स फंक्शन नाउ. तो आई एम पुटिंग द इंडेक्स फंक्शन ओवर हियर. इंडेक्स array. What should I select in the array? All these numbers. All these numbers will become a part of my array. Now give me a row number and give me a column number. कोई भी एक नंबर दीजिए. The row, there are how many rows are there in the table, in the selected table? Give me the answer in the chat box. सब लोग लिखेंगे कितना रो है. How many rows are there in the table? 3. Very good. There are 3 rows. How many columns are there in the table? There are 4 columns. ठीक है, 4. 4. ठीक है, तो 3 रो है और 4 कॉलम्स है. अब मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर देना. थर्ड रो और फोर्थ कॉलम में क्या वैल्यू है? थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम में क्या नंबर लिखा है? थर्ड रो 12. एंड फोर्थ 12. कॉलम. 12. 12. 12. 12. So we are getting 12 as the answer. We are getting 12 as the answer. So what I have done, I have used the index function and the table and I have given 3 and 4. So 3 is the row, 4 is the column. Now suppose I write 2 comma 2. What will I get as an answer? Tell me in the chat box. 4. अगर मैं 2 comma 2 में लिखता हूं तो क्या आंसर आएगा? 7. Exactly. 7. If I write 3 comma 3, what will be the answer? If I write 3 comma 3, what will be the answer? 11. If I write 3 comma 3, 11. That means you have understood the index function well. आपको ये index समझ में आ गया. Understood everyone? Can you type U in the chat box so that I can come to know that you have understood? Understood. Okay. So this is the index function. What will match do? Now what we'll do is we'll create a drop down over here. ठीक है, हम क्या करेंगे? ड्रॉप डाउन बनाएंगे. इन नंबर्स को लेके एक ड्रॉप डाउन बनाते हैं. तो व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट? Alt प्लस A बी plus ऑल्ट B. प्लस ए प्लस बी. Alt plus A plus B plus B. This is the shortcut key for creating a drop down. I'm creating a drop down over here. Alt A V V. And what we will select? List. और लिस्ट में सोर्स क्या देंगे? ये सब. Now see, whenever you are creating a drop down, either the numbers, all the consecutive numbers should be in the row or should be in the column. ऐसा tabular form में नहीं हो सकता है. ठीक है, तो what I'm doing is I'm typing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So I have got a drop down.
ठीक है, मैंने ड्रॉप डाउन बना दिया। ठीक है, अब what I want to do with this, so let us see what we can do with this. So now I will use the match function, match. ठीक है, what will match do? Let us see what will match do. So lookup value जब भी आती है तो क्या मतलब होगा उसका बताइए। लुकअप वैल्यू जब भी आएगी इसका मतलब क्या होगा? सर यू वो कैन जिसको अनम्यूट एंड हमें आंसर। लेना ढूंढना है सर, हाँ what we want to look for. हाँ, the value which we want to look for, the value which we want Right. to look for. So I want to look for this 9 number. Okay, so this is my lookup value. Where I want to look for this value, where I want to look for this value. So I want to in look the for this same value in table. this table. So I want to look for this value in this table. ठीक है, किसे ढूंढ रहे हैं, कहाँ ढूंढ रहे हैं? ठीक है, और इससे ज्यादा वाली वैल्यू चाहिए, इससे कम वाली वैल्यू चाहिए, या एग्जैक्ट यही नंबर चाहिए? बताओ, इससे बड़ा नंबर चाहिए, छोटा चाहिए, या यही चाहिए? Exactly. Exact. एग्जैक्ट, करेक्ट. So if you want exactly this number, then what should we write in the options? 1, 0 or -1? 0, 0, 0. 0. We'll put a 0 and we'll close the bracket. So don't we have a 9? We have a 9, right? So lookup value, lookup array, and match. We are not getting the answer. Why we are not getting the answer? Now let me do one correction. Are we getting the answer now? What answer are we getting now? We 3. 3. Now why we are getting 3? Can anyone tell me why we are getting 3? थोड़ा सा सोचेंगे, दिमाग घुटनों पे थोड़ा सा जोर डालेंगे तो आंसर आ जाएगा. third row, that's why. 4 rows, 3 Why we are columns. getting 3 as the answer? Because the 9 number is in the third row. Position of row. Yes, ma'am. Saroj, ma'am, you're right. It is the position of the row. Now, if I select some any other number, let's say 1, what I'm getting answer as 1. If I 1, select 8, what I'm getting the answer as 2. So 2. it is giving me the position of the row based on my selection. But suppose I select any another number, let's say 4, it will give me a NA. Why it is giving me NA now? Can anyone tell me? Because Why we are getting? we have not selected that row or column, sorry. Exactly. Yes, we have not selected that column which contains this number 4. So if I select that column which contains 4, that is Q4 to Q6, then what I'm getting? 1. Or I can also do this way. I can select N4 to Q4. N4 to Q4. So I've selected this row. Okay. Now what should I get the answer? Tell me. Once I've selected the row, where is the number 4 placed in this row? At what Fourth, position? fourth row. Fourth column, sorry. It is Fourth fourth column. column. Correct. Fourth column. So the index work with the array. That means it will work with a table, which is a combination of row and column. But the match function work only with the row and only with the column. Correct? Now, how it is used? For example, suppose we have some student's name. Okay, let me use some of the students from the chat. Ravi, Shreyansh, Sumash. Okay. So I'm putting some name. Ravi, Shreyansh, Subhash, Saroj, Vishaka, Ravindra.
Okay, now suppose I have put these names. These are the position of the students in the class. Okay, these are the position of the students in a class. So first position, second position, third position, fourth position, sixth position, seventh position. Let me put some. These are the position of the students in the class. Okay, and let me put one more name. And what I want to do is I want to find out what is the position of a particular student based on the drop down. So I'm creating one more drop down over here, which will have the names of all the students. So I've created the drop down over here. Now I want whatever student I'm selecting, what is the position of that student in the list? That number I should get. Whatever based on my selection of the student, what is the position of that student in the list that I should get over here? ठीक है? समझ में आ गया हम क्या करना चाह रहे हैं? Everyone, what we are intending to do, have you understood? Yes, sir. Based on the selection of the name, I should get the position of the student in the list, a rank of the student. Now I will use the match function. Match में lookup value क्या होगा? ये. Lookup array क्या होगा? ये. है ना? It has to be a column or a row. So I'm selecting the column. And match type will be 0. Now what we are getting as the answer? What we are guessing as the answer? 5. 5. Instead of using rank, I'm calling it as position. Now if I select Ankit, what we are getting? What we are getting? 7th 7. position. Ankit is at 7th position. If I use Saroj, it is on 4th position. If I select Shreyansh, 2nd position. Vishaka, 5th position. Understood? Yes. Everyone understood? So it is giving me the Sir. position of the Yes, column. sir. Now suppose if I put the names like this, on the in one row. Earlier I put the names in column. Now I'm putting the rows names in one row. Okay, they are in one row. Now I will apply the same formula, but with this data set. Okay, I will apply the same formula, but with this data set. I'm using match. I'm using this lookup value, but my lookup array is this row now. Now tell me, if I am putting Vishaka, what number will I get? 5. Same, we'll get the same number. If I select Subhash, I will get the same number. So have you understood how match is working now? Match is working on the column as well as on the row. Have you understood this? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. Now, how we can use index and match together? Okay, because we have understood index also. Okay, what will index do? Suppose I want to find out, give me the name of the student who is in the 5th position. I want to do reverse. I will define the position and I should get the name of the student. I want to do reverse. So I'm writing here position. And here I'm writing student name. I want to do reverse. Now, can anyone tell me how do we do this? So here I should have the option of selecting the position. So again, we will create a drop down. So I have the option to select the position now. Based on the selection of the position, I should get the student name. How do I do it? Tell me. जो भी पोजीशन मैं बताऊं उसके हिसाब से मुझे Index function. कौन सा फंक्शन काम में लेंगे? Index. इंडेक्स. चलो ठीक है, इंडेक्स करते हैं. इंडेक्स. Array. What should be the array? We can select the column or the row, whatever we want. No. What in the index? What is the array? Tell me.
What should we select Uh, from this list? Hi. This column list, V, column V from yeah, Ravi column to B, yeah, from Ravi to Ravindra. That will be by array because I want to look for a name of the student in this. Now, what row number should I select? What should be the if row number? the list basically, the Huh? list value, selected value. This value, the position, this value. Yes, Okay. And what should be the column number? How many columns are there in this data, by the way? one. One column. So we'll put one only. And now we'll close the bracket. Now, just tell me, are we getting the right answer for the selection I'm doing? Are we getting the right answer? Yes, sir. So have you understood how this index is working? Yes, sir. Correct? Right? Index is working. And now we will put them together here. So I'm going to use the index and match function to get the salary based on email ID. So let's try this index. We'll use index. Now table array. What should be the table array? This table. Okay. Now let me convert this into a table. This is not a table actually. Let me convert this into a table. How do I create a table? What is the shortcut key? Control T. Control T. Okay, but what we will do, we have to delete this row because this is not a part of the table. Now I'll press Control T. Now this is a table. Okay, this is a table now. What is the table name? Table 2. I will call it as ET. ET means employee table. I have renamed this table as ET. Okay. Now let me apply the formula here. Is equals to index. In the array, what I'll do? I'll type ET. ET means the table. So it has selected the entire table over here. The entire table got selected when I type ET. After ET, it is asking me row number. Now, what should I give in the row number? What row I need to look for in the email ID? So, which row will have this email ID of quentin.carney@gmail.com? Which row has this email ID? Do we know? We don't know. We don't know, right? Do we know the row number? Which row has this email ID? No, Yes or sir. no in the we don't No, know. sir. We don't know. So how can we find out the row number in which this email ID is present? Which formula will Match, help us in finding out the row number? The position of match, this match email ID. function. Match function. Correct. So match function will help us in finding out the row number for this particular email ID. So I'll use the match function and then I will use the lookup value as this email ID. Now what should be the lookup array? What should be my lookup array? E6. The lookup array will be what? G. The column which has the email ID. See again, Right. I am G. repeating. Again, I am repeating. Whenever we are using match, सब लोग ध्यान से सुनना कान खोल के. जब भी हम मैच यूज कर रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉर अ लुकअप वैल्यू. तो लुकअप वैल्यू हमने लिया E6. ठीक है. उस इसे हमें ढूंढना था. कहाँ ढूंढना था? उस कॉलम में. पूरी टेबल में नहीं ढूंढना है, एक पर्टिकुलर कॉलम में ढूंढना है. तो वी विल सेलेक्ट द कॉलम ऑलवेज. And what match we want? We want an exact match. So we'll have a 0. Is it clear to everyone? Yes, sir. Is it? Yes, sir. तो ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा? ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा? Row बताओ number जल्दी से. in हाँ, row number. row number in which that email ID is there. Exactly. It will give me the row number in which the email ID is present. But do I want the email ID ka row number or do I want the salary of the email ID? Salary.
I Salary. want the salary of the email ID. ठीक है. Now, which column has the salary? Which column has the salary? From the entire table, we have to count from the entire table. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. The 11. 12th column has the salary. So I'll just put 12. And the index function is now over. So index function has basically three parameters: the array, the row number, and the column number. Column number I counted. For row number, I've used the match function. Correct? Can I use the match function for the to find out the row number also, the column number also? Yes. Yes. Okay, I'll show you. First, I have got this salary. Is it correct? 194,686. Let us see. So this was the email ID that I was looking for. Where is that email ID? This one, the next one. Okay. The one which I have marked with yellow color. And the salary belonging to this email ID is 194,686. Are we getting the right answer, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो आपको समझ में आ रहा है ये इंडेक्स और मैच? Are you understanding? Is it easy or is it difficult? Or it is little difficult? You can put in the chat box. What do you think? कैसा लग रहा है? Easy है, tough है, difficult है, hard है? So practice is required to remember it. Exactly. Practice is required to remember it. हाँ, बिना practice के तो नहीं हो पाएगा. Definitely, practice is required to remember this. Now, we will go one step ahead. ठीक है? वो little difficult. हाँ, little difficult. Correct. So no problem. Every difficult thing has a great ending in the end. Okay. So कोई बात नहीं. It will become easy. For me also, it was difficult when I learned it for the first time, but when I put it 100 times, then it become easy for me. So you're doing for the first time, so I can understand. ठीक है. तो I was saying something, मैं भूल गया था. हाँ, अब हम क्या करेंगे, इसको अपडेट करेंगे इस फॉर्मूले को. ठीक है. तो आई विल यूज टू मैच फंक्शन इनसाइड वन इंडेक्स फंक्शन नाउ. ठीक है. कैसे देखिए. सो आई एम यूजिंग इंडेक्स. वी आर डूइंग इट अगेन, वन मोर टाइम रिपीटेशन कर रहे हैं तो समझ में आएगा. व्हाट शुड आई डू व्हेन आई ओपन द इंडेक्स फंक्शन? पहला, इफ यू विल पार्टिसिपेट इट विल बिकम इजी फॉर यू. ठीक है. तो चलिए बताइए, इंडेक्स फंक्शन लगाते वक्त क्या पहला चीज क्या आएगा इंडेक्स में? Select व्हाट इज द table फर्स्ट? ET. हाँ, Type E. the ET. table ET, very good. Whosoever is saying this, ET is the right answer. Correct. Now, what will come after ET? Say it is asking for a row number, it is asking for a column number. सर मैच अब ये फंक्शन डॉरिस डॉट लगाना गेलिस, ये कौन सी रो में हमें पता है क्या? G. Do we know which नो row is this in the table? Doris dot नो Gillis. We don't नो know actually. We don't know this. We want to find out this, right? So what we need to do, we need to count the number of row in which this email ID is present, right? And to count that number of row, what formula we will use now? What function are we going to use to count the number of row in which the email ID is present? Match function. मैच फंक्शन. Match function. Correct. तो ET मैंने टेबल सेलेक्ट करा. अब हम लगाएंगे मैच फंक्शन. मैच फंक्शन की शुरुआत कहां से होगी? Lookup. लुकअप वैल्यू से. Doris लुकअप वैल्यू dot क्या है? सर डॉरिस G6 नहीं सॉरी that email. हाँ मेल E7. आईडी कॉलम. करेक्ट, E7. ठीक है. ये मैच के अंदर लुकअप वन E7 क्यों आ रहा है? क्योंकि लुकअप वन इज द शीट नेम. ठीक है, इसलिए वो आ रहा है. ठीक है. तो कंफ्यूज मत होना, अगर हम E7 भी लिखेंगे तो भी ये सिलेक्ट करेगा. ठीक है.
Now, what it is asking for lookup array. Now, tell me what is the lookup array? लुकअप एरे क्या है? टेब कॉलम कॉलम लिखना है। कौन सा कॉलम? जी ईमेल ईमेल कॉलम। हाँ, ईमेल कॉलम। हाँ, तो यही वाला ईमेल कॉलम या कौन सी टेबल का ईमेल कॉलम? टेबल ईटी का ईमेल कॉलम। हाँ, ये दिस इज द एग्जैक्ट आंसर आई एम लुकिंग फॉर। तो एग्जैक्ट आंसर देना है हम लोग को, है ना? ईमेल आईडी तो यहाँ पर भी है, लेकिन हम इस ईमेल की बात नहीं कर रहे, ईटी वाले टेबल का ईमेल कॉलम कर रहे हैं। तो अब देखिए, हमें उस शीट पे जाने की जरूरत नहीं है। वी विल टाइप ईटी। ईटी मीन्स द टेबल। आई विल ओपन द स्क्वायर ब्रैकेट एंड आई विल पुट द ईमेल। तो ये कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा वहां पर जाके, ठीक है। और रख देंगे 0 बिकॉज यू वांट एग्जैक्ट मैच। इससे क्या होगा? चलो, इफ आई क्लोज दिस फॉर्मूला विल इट गिव मी द आंसर? नो। No. If I close this table, it will give me answer or not? अभी मैंने क्या करा, देखिए मैंने क्या करा, इंडेक्स फंक्शन लगाया, मैंने टेबल सेलेक्ट करा, रो नंबर में हमने ये लगा दिया और कॉलम नंबर में दे दिया मैंने 1। ठीक है। नाउ टेल मी व्हाट इज देयर इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ दिस टेबल? व्हाट इज देयर इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ दिस एम्प्लॉय टेबल? आईडी एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी। करेक्ट। और डोरिस, डोरिस का एम्प्लॉय आईडी क्या है? 118109। ठीक है। तो डोरिस का एम्प्लॉय आईडी आ गया है यहाँ पर। हम्म। Yes. क्या डोरिस का एम्प्लॉय यस आईडी आया है? यस और नो, टेल मी। यस Yes, sir. यस सर। पर ये तो लेकिन गलत है ना, हमें तो सैलरी हाँ, निकालनी। हमें तो सैलरी चाहिए सर। एम्प्लॉय आईडी का क्या करेंगे? हमने तो उसे बुलाया ही नहीं, वो क्यों आ गया? बताओ क्यों आ गया एम्प्लॉय आईडी? कि कॉलम नंबर रिवर्स सही है नहीं वो था सर, फंक्शन इसीलिए। हाँ, कॉलम नंबर 1 लिख दिया था। ठीक है। अब 1 क्यों लिख दिया सर? क्योंकि ऐसे ही हमें नहीं पता था कि सैलरी कौन से कॉलम में होती है। अब मैं 7 लिख देता हूँ, तो 7 में देखो ईमेल ही आ गया। अगर मैं यहाँ पे 12 लिख देता हूँ, तो आया 176813। 176813 देखा जाए तो उसकी सैलरी है। ठीक है। ठीक है क्या? यस सर ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सैलरी ढूंढ रहे हैं, तो पहले मुझे 3 स्टेप्स में ये काम करना पड़ेगा। पहले मुझे इंडेक्स फंक्शन यूज करके इंडेक्स में टेबल देना पड़ेगा, टेबल का कौन से रो पे जाना है और कौन से कॉलम पे जाना है। ये बिल्कुल वैसे काम कर रहे हैं जैसे सलमान खान का वो गाना है ना, कौन सी वाली मूवी में, आई थिंक इट इज कुछ कुछ होता है। और यस, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है में शाहरुख खान था और सलमान खान भी था, है ना? लोगों को पता नहीं है, लेकिन हाँ, जब काजोल की शादी हो रही होती है तो सलमान खान से होती है। तो उसमें एक गाना होता है, उसमें एक लाइन होती है बेसिकली, हम तुझको उठा कर ले आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इंडेक्स फंक्शन है ना, वो क्या कर रहा है? हम तुझको उठाकर ले आएंगे। किसको उठा के लाने की बात हो रही है यहाँ पर? सैलरी। हाँ, सैलरी की। सर काजोल की बात नहीं हो रही है, सैलरी की हो रही है। ठीक है। कोई सर कोई लिख पर रहा है हमने जो काजोल। मैथ मैथ फंक्शन लगाया, हाँ, तो लगाया। उसमें हमने ईमेल आईडी को यूज किया है ना, और हाँ, उसमें रो करेक्ट। कॉलम हमने सेलेक्ट किया, बट जब हमने 12 सैलरी ली तब हाँ, आगे सुनाई नहीं दिया मुझे, हैंग हो गया आवाज। जब हमने रो आईडी सेलेक्ट करी, तो किसी को सुनाई दिया है क्या बोल रहा था? नो सर हाँ हाँ, वो कॉल आ गया था सर। हाँ, सो बोलो। वो जो 12 हमने लिया सैलरी में, वो हाँ, उस टाइम पे हमने मैच नहीं लगाया, ऐसा क्यों? लगा रहे हैं, लगा रहे हैं। तुम्हें बुरा लगा क्या? मतलब एक बार लगा रहे हैं, एक बार नहीं लगा रहे हैं और वैल्यू आ रही है, तो मैं कंफ्यूज ये हूँ कि एक ही बार क्यों लगता है, दोनों जगह क्यों नहीं लगता? हाँ, लगाएंगे लगाएंगे, 2 बार लगाएंगे। परेशान मत हो।
ठीक है, मैच फंक्शन लगा रहे कॉलम ढूंढने के लिए भी। अच्छा चलो तुम ही बताओ अब क्या लिखें, लुकअप वैल्यू क्या होगा मैच फंक्शन का? लुकअप वैल्यू क्या होगा? क्या ढूंढ रहे हैं हम? एम्प्लॉय आईडी तो मिल गया, अब क्या ढूंढ रहे हैं? सैलरी। F4 salary. सैलरी, वेरी गुड। ये किसने बताया ये आंसर F4? कैन यू टेल योर Harshita नेम? sir. हर्षिता, हाँ। ओहो। Hello. Yes, yes, yes. Yeah, yes, right. I was thinking whether my students have answered this or not. F4, अरे अक्षत तुमने क्यों नहीं बताया ये आंसर? क्या ढूंढ रहे हैं हम? सैलरी ढूंढ रहे हैं ना? तो सैलरी हाँ को ढूंढ हाँ। रहे हैं कि किस कॉलम में सैलरी है, तो इसलिए F4 सेलेक्ट हुआ है। ठीक है। नाउ बताइए सैलरी कौन सी, कहाँ, कौन सा लुकअप एरे क्या होगा, कहाँ ढूंढ रहे हैं सैलरी को हम? कॉलम में। कहाँ ढूंढ रहे हैं सैलरी को? Row व्हाट शुड आई 1. सेलेक्ट इन द लुक? रो वन, वेरी गुड। तो यहाँ ठीक है, ये पूरी रो सेलेक्ट करेंगे। और जो तुम कह रहे थे कि मैच फंक्शन दोबारा क्यों नहीं लगा रहे, ये मैंने लगा दिया है। ठीक है, मैच फंक्शन में लगा दिया है। बट आंसर सही नहीं आ रहा है इसका, एक सेकंड, क्योंकि मैंने जीरो नहीं लिखा। वेरी गुड, आई पुट जीरो, आई फॉरगॉट टू पुट जीरो। पर वो वेट, ब्रैकेट दो है। ब्रैकेट दो है? मुझे हाँ वो चाहिए दो ही आंसर। होंगे, क्योंकि एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। एक मिनट, फादर नेम से क्यों सिलेक्ट हो गया? ये फादर नेम से नहीं करना था, मैं शुरुआत से शुरू करना था। एक मिनट। In the match function, basically we are going to find out where this salary is coming. So F4 select करा. Now I am selecting the headings from the starting. ठीक है, तो I'll select the headings from the starting. Employee ID से लेके जाना है हमें कहाँ तक? आखिरी तक, रीजन तक। Now it will be okay. हाँ, are we getting the right salary now? Are we getting the right answer now? यस। यस सर। So this is the formula which I have used. ठीक है। इंडेक्स, ईटी, ईटी क्या था? टेबल का नाम। मैच फंक्शन हमने लगाया क्या ढूंढने के लिए? रो ढूंढने के लिए। कौन सी वाली रो? जिसके अंदर मुझे कौन मिले? ईमेल आईडी मिले। और फिर हमने क्या ढूंढा? सैलरी कौन से कॉलम में है। तो हमने हेडर को चुना है कि सैलरी कौन से वाले कॉलम में आ रहा है। देखो इसका आंसर भी दिख रहा है 12। क्या आपको ये छोटू 12 नजर आ रहा है? एक सेकेंड, वापस से करते हैं। मैच फंक्शन को सेलेक्ट करेंगे, देखो इसका आंसर भी दिखाएगा यहाँ पर। कैन यू सी दिस 12? छोटा सा बिल्कुल बीचों बीच में, ईटी के यस ऊपर, सर। हाँ सर, है दिख ना? रहा है। हाँ दिख रहा है। तो ये बता रहा है कि 12वें नंबर के कॉलम में सैलरी है। अभी एक जादू दिखाता हूँ आपको। मान लो आपको ये डॉरिस जो है उसका फर्स्ट नेम चाहिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम। आर वी गेटिंग डॉरिस? मान लो उसका स्टेट चाहिए, कौन से स्टेट में रहता है ये। आर वी गेटिंग द स्टेट? मान लो उसकी सिटी चाहिए। आर वी गेटिंग द सिटी? मान लो उसका लास्ट नेम चाहिए। आर वी गेटिंग द लास्ट नेम? लास्ट नेम, सॉरी। यस। तो ऐसा कैसे हो रहा है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस मैजिक व्हिच इज हैपनिंग हियर? सर हमने पूरी रो सिलेक्ट की थी। नहीं, Column number is changing based on our selection. एग्जैक्टली। सी आई अंडरस्टैंड दोज, फॉर देम एक्सेल इज न्यू, इट इज गोइंग टू बी टफ। लेकिन कोई भी चीज डिफिकल्ट और इजी नहीं होती, इट्स ऑल माइंड सेट। ठीक है। दूसरा, यू हैव टू अप्लाई, कीप योर माइंड कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड इन दिस। ठीक है। अगर तुम ये क्लास अटेंड करते वक्त मोबाइल भी देख रहे हो, समझ गया सर, या समझ गया और भी सर। कुछ कर रहे हो, या इधर भी कुछ कर रहे हो, उधर भी कुछ कर रहे हो, टाइम देख रहे हो कि 10 बज गए, 2 मिनट ज्यादा हो गए, सर कब खत्म होगी क्लास, तो आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट, यू हैव टू फोकस 100% हियर ओनली, देन यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हैपनिंग। तो मैंने क्या किया, आई हैड लिंक्ड दिस सेल F4। अब जो मैं F4 में लिखूंगा वो वाले कॉलम को ढूंढेगा, वो वाला नंबर देगा और उस नंबर से वैल्यू निकाल के लाएगा।
ठीक है, अगर मैं इस कॉलम में एम्प्लॉय आईडी लिख देता हूँ तो एम्प्लॉय आईडी पहले कॉलम में है, तो पहले कॉलम में से वैल्यू उठा के ले आएगा। क्यों नहीं आ रही? स्पेस है इसके अंदर इसलिए। ठीक है, इट हैज टू बी सेम, एग्जैक्टली द सेम जो आपका कॉलम में है। तो आप जो भी अरे डेटा डालोगे वो फैच हो जाएगा वहां से। एग्जैक्टली यस, जो भी आप डेटा डालोगे वो फैच हो जाएगा। आई बात समझ में? यह है इंडेक्स एंड मैच। यस तो सर। आज हम यही करेंगे, क्योंकि आज मेरा प्लान था कि मैं वी लुकअप आगे बढ़ाऊं, लेकिन इंडेक्स एंड मैच नहीं, सारा टाइम ले लिया। लेकिन आई होप समझ में आया होगा। याद रहेगा या नहीं रहेगा, या प्रॉपरली खुद से एक बार में आंसर आएगा नहीं आएगा, लेकिन एटलीस्ट समझ में आया या नहीं आया ये बता दो बस। आया सर, समझ गया सर। समझ आया ना? हाँ, तो समझ आने के बाद याद रखने के लिए ऑब्वियसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस करने के लिए फाइल मैं शेयर कर दे रहा हूँ, इसके अंदर फॉर्मूले लगे हुए हैं। देखिए, जो प्रैक्टिस करेगा उसको फायदा होगा, है ना? जो सेशन में आ रहा है उसको भी फायदा होगा, जो प्रैक्टिस करेगा उसको भी फायदा होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपका नुकसान है। ठीक है, और अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो फायदा भी आपका है। ये चीजें अभी शायद इतनी रेलेवेंट नहीं लग रही होंगी जो स्टूडेंट्स हैं उनको, ये। लेकिन देर आर सम प्रोफेशनल्स लाइक हर्षिता इज अ सीए फ्रॉम कोलकाता। ठीक है, तो हर्षिता, वुड यू लाइक टू explain them? These are actually students who are doing MBAs, MBA. Most of them are students. There are some CAs in the meeting. एक प्रभावती सरोज है, शी इज ऑल्सो सीए, and Harshita is also Yes, CA, sir. and Ankit is a RM in Nippon India Mutual Fund, है ना? तो there are people who are professionals in this call। ठीक है, तो अभी उन लोगों से ही समझते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट ऑल दिस। ओवर टू यू हर्षिता। Thank you, sir. So first of all, I would like to thank you for giving so much time for a student. I am considering myself as also as a student only, because learning this in so much detail. I mean, personally, I haven't learned it in such detail before. And to all the students here, I mean, Excel is the key if you want to grow in any field. I mean, apart from if you are in marketing, but if you understand numbers, then again it will help you to have a hold of the market and do analysis. So whatever field you are in, you'll have to get hold of Excel. It'll at least help you to move ahead at a faster pace. So please practice. I would request everyone. Sir is putting so much efforts, and we should equally put our efforts. I mean, more than that, so that we grab everything whatever he's teaching and make 100% out of it. Thank you, sir. थैंक यू हर्षिता। सो आई होप यू द मैसेज वाज लाउड एंड क्लियर, एंड इट इज द फैक्ट। मतलब आई हैव बीन ट्रेनिंग ऑन एक्सेल फ्रॉम लास्ट 10 years, and touch wood, it is going good. Like, whenever I meet people from across the globe, it is the same everywhere. तो now it's up to you। ठीक है, आपको सीखना है नहीं सीखना है। There are 200 plus participants in the group, in the WhatsApp group, and I see near about 18-20 people attending. I'm not charging anything also for the from the students, and I'm doing it for free. But are you really taking benefit? Those who are taking benefit, they will reap the results. Those who are not taking the benefit, they will also learn somehow, but I don't know how much they're going to benefit from learning, because there are so many videos. If you look at the videos on index match, I've seen myself 100 videos on index and match, but I did not get a clarity. I got a clarity when I worked on it. Then I decided that I'll make it very simple for everyone to understand this. So this is what I am doing from my end. Now it's totally on you. How do you take it? Those who are attending all the sessions regularly, is there someone who is attending
who has attended almost all my sessions. From the students, those who are professional, they are attending because they want to learn. जो भी स्टूडेंट है उनमें से कोई ऐसा बंदा है जो ऑलमोस्ट डेली आ रहा है. आई थिंक कुसुम इज अटेंडिंग, है ना? और कोई है? Yes, sir. Sir, अक्ष I missed Yes. 2-3 lectures and I'm हाँ, attending all the. correct, correct. Anil Kumar, you are also attending. Anil, you are from which batch, like which college? Uh, ISM, sir, Bangalore. ISME Bangalore, yes. So good that you are also joining in. So there are people from different colleges, universities, professionals. So you can take the benefit of attending the session and participating and learning. These all things will be required when you work in a company, and it will help you in your placement. You will have an upper hand. So with this, we'll conclude today's session and keep practicing. I'll share this file in the group as we close this. And those who are not coming, those who are not joining, you can motivate them. See, every time we should not be selfish only कि मैं सीख लेता हूँ, किसी और को नहीं बताता हूँ, मेरा फायदा होगा, है ना? दिस इज अ नेगेटिव थिंकिंग. What you should think is कि if I'm getting benefited, then I should tell five more people to get benefited from it. Okay. And I am not doing any kind of promotion or any kind of marketing for this. Okay, there is a paid course also. People have paid for this course. Okay, but there were few participants only. So I thought if I'm devoting 1 hour, let that 1 hour be beneficial to anyone who wants to learn and who is not in a position to pay or may not want to pay. Okay, but sometimes people take things for free as granted, so they are not serious. But I'm happy at least those who are coming, they are staying till the end. That shows the seriousness. Okay, so you can spread this word amongst your circle, and whosoever wants to join the class, it is going to be free because I'm by God grace, I'm getting good amount from my trainings and all. So that is enough to run my family and myself. So this is a part of service that I want to do for the society, and that is why I'm inviting anyone who wish that their friends or colleagues or anyone who would like to join this, they can join. But I want serious learners. I don't want crowd. मुझे ये नहीं है कि मेरे बैच में 100 लोग आए या 500 लोग आए या 1000 लोग आए. सिर्फ 5 लोग भी आएंगे, लेकिन 5 लोग अगर ढंग से सीख रहे हैं, दैट विल मेक माई डे एक्चुअली. तो आई एंड माई डे बाय दिस सेशन. तो मैं चाहता हूँ कि जब दिन खत्म हो तो लगे कि हाँ कुछ आज अच्छा हुआ है. ठीक है. सो एंड यू ऑल कैन हेल्प मी इन डूइंग दिस. ओके. So thank you all, and thank you all for joining. Keep practicing, and I want more participation from your side. So when you practice and come, even if you don't get time during the day, I know people are very much occupied from morning 8 o'clock to 3 o'clock. You are in college. Even I am in college. Then I come home. The same way you reach home, I also reach home. Then I do other things, and then I take this class, right? So we are all living our day and doing work. उसके बाद भी अभी there are professionals who are doing audits. अभी तो सीजन चल रहा है ऑडिट का, उसके बाद भी क्लास में आ रहे हैं. तो सी द काइंड ऑफ विलिंगनेस टू लर्न. तो वही चाहिए. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लुक फॉर द बेस्ट. ठीक है. So we'll meet you tomorrow again at the same time, 9 o'clock, and I'm sharing the file in the group. Okay. Good night Thank and you, see you sir. tomorrow.